थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबडी. मुझे पता नहीं कितने लोग ने फिल्म देखा है. अगर इफ यू हैव सीन इट एंड लाइक्ड इट, आई एम वेरी हैप्पी. मैं एक्चुअली आई वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी कि जो जो जिन आप लोगों ने फिल्म देखा. सो जो पिछले द फिल्म एंड्स विद द लास्ट 40 मिनट्स. आई हैव डेल्ट विद इट यस्टरडे इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. तो मतलब जिस तरह से वो उतना टेंशन था. I want to thank the Honorable High Court of Delhi because finally they have seen it our way. We are releasing tomorrow, August 15th. Thank you. His Honor Justice Vibhu Bhakru. I'm just I'm very happy. I'm very happy. बहुत टेंशन था कल, but we are very happy. Ultimately जो हमने बनाया है, जो हम बनाना जो कहना चाहते थे फिल्म के ज़रिए, आई थिंक दैट दे अंडरस्टूड. दे आई वांट टू कॉल जॉन इब्राहिम who's without whom आपने उन्हें फिल्म देखा है. I don't have to say much about what John's contribution to this film is. So yeah, so I'll do that in the okay. I just want to so lots of people are going to go tomorrow to see our film and to see Mission Mangal also. The courts have directed us to do about five cuts, which we have done as of yesterday in the afternoon, from 6 o'clock in the evening till very late in the night. Early this morning we have been making those cuts. The prints have been sent out. Some centers in the rest of India, the prints will reach only by maybe 3 o'clock tomorrow evening, maybe 6 o'clock tomorrow evening, maybe late at night. As a result, there will be some shows that will start, some centers in some cities where it takes time for the prints to reach. It will take time for it to reach. We just want people to bear with us. We have tried our very best to send it to everybody in time, but there will be some centers that will not open till late tomorrow evening. So if you can just take that message out, that will really tell for everybody who's waiting for it. The film will reach, but it might take a bit. It might take a couple half a day tomorrow to reach those centers. पब्लिसिटी से अच्छा रिव्यू और वो सब मिलेगा. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत I also want to call Madhu Bhojwani. She is the producer. I've always underestimated Madhu. वो क्या करती है ऑफिस में, मेरे पीछे पड़ती रहती है, बजट काटो ये आप. Yesterday she stood like a rock in the high court, and मतलब वो जिस तरह से I have no more words. Madhu, please. Thanks, Nikhil. I don't think I should stand here and take the credit by myself. I think the whole team has pulled together. It wouldn't have been possible without a director who has not only stood by his conviction, but stood there and fought for everything that he believes in. And Monisha, you're not here on the podium, but I think the three of us really stood together, held each other. Yesterday, the day in court was very tough. I think वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि बाजी आपके अगेंस्ट है और फिर वो कैसे पलट जाती है, क्या होता है जैसे फिल्म में हुआ. जैसे मतलब I really felt. So I think it was a day in the movies for us yesterday, but हम हैं यहाँ पे. I think that's what matters, and I just want to take a moment to say thank you to all our lawyers, the whole legal counsel team, the teams at MA, at T-Series, J Entertainment, everybody. And Panorama also. And Panorama. Murli Chatwani, Kumar Mangal, Yes. they have been working through the night to make sure that the prints will reach tomorrow. Yeah. In most of the centers and most of India it will reach. I mean, we
stood in court on our feet from 10 a.m. to 6 p.m. 6 बजे तक हमको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, ये पिक्चर आएगी नहीं आएगी. The kind of cuts that they asked us to make, we didn't know, should we bite the bullet, should we not, does it compromise the narrative? But finally 6 बजे जब हमें green signal मिला, I think the weight of the world lifted, और फिर उसके बाद we had to go back to take on the stress of getting the prints out. So और उसके बाद जब मैं बाहर निकला, उनके तरफ के जो लोग हैं मुझे सेल्फीज मांग रहे थे. तो मुझे मतलब मेरे लिए बहुत सरियल था वो. नहीं, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो निखिल बोल रहे हैं, क्योंकि निखिल और मैं जज के चेम्बर में गए, जो हमने सजेस्टेड चेंजेस की बात करी थी उनको दिखाया, और उन्होंने देखा, अपोजिंग काउंसिल ने देखा, और जब हम बाहर निकले तो जो क्लर्क थे जज के चेम्बर के बाहर, हम लोग बाहर निकल रहे थे और उन्होंने निखिल को बोला, सर एक सेल्फी प्लीज. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट मोमेंट. John, anything you want to say? No, I mean, thank you for being here. Any questions anybody has to ask, more than happy to answer. Yeah. No, Indian No. Mujahideen has not been muted. No. Yeah, so they've asked me to beep out some stuff. I mean, the word Mujahid has been, they've asked me to beep out, but they asked me to cut out 2 sequences of the boys. Make changes, not cut out, deletion as well as make changes in 2 sequences of the boys, which I felt it was going to help in balancing the story slightly, but they felt that because the right to freedom of expression gets trumped in by only one other right, which is the right to fair trial, and they felt कि इन लोग का जो trial अभी भी चल रहा है, the film might prejudice. We fought, and we basically, they wanted to delete that section. We said no, so we've agreed to certain changes in that section. I wish we could not do it because I felt that was very important to tell us the story of the boys and where the boys were coming from. That is what they had asked me to make some changes over there. Disclaimer को लोग ने change करवाया, and they've asked for a super in the court. In the courtroom scene एक super आएगा, जिस तरह से statutory warning alcohol और इसका आता है, अभी इसमें भी एक छोटा सा super आएगा, which basically says that it is based on what a judgment that the etc. filmmakers don't endorse either view. Yeah, that is, सब कुछ is there. Don't worry, that is there. We fought, it is there. निखिल जी, मेरा सवाल आपसे है. जी. ये जो फिल्म है, देखते साथ ही हमें पता चल गया था कि डी-डे के डायरेक्टर तो डरेंगे नहीं, और बहुत बधाई के पात्र हैं. आपने अमर सिंह को, दिग्विजय सिंह को दिखाया, लेकिन मुझे क्यों लगा था कि आपसे ही ये क्वेश्चन आएगा. मुझे पता था से आपसे ही ये क्वेश्चन आएगा. नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो आगे है, आपने इसमें निजामपुर दिखाया, जबकि वो आजमगढ़ था, और वहां पर जो थे वो राजा भैया थे जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था. तो और जो जिस तरीके का आपने, तो बहुत ही ब्रेव आपका स्टेप था कि आपने ये भी कहा कि हमारी सरकार है, क्योंकि अखिलेश सरकार उनको सपोर्ट कर रही थी. तो आप ने मतलब जो आजमगढ़, जब आप पीलीभीत दिखा सकते थे, तो आजमगढ़ क्यों नहीं? क्योंकि मैम मैं जब रिसर्च कर रहा था फिल्म का, तब मुझे जो जामिया मिलिया टीचर सॉलिडारिटी यूनियन से एक रिक्वेस्ट आया कि जिस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सारे मुसलमान आतंकवादी है या सारे हिंदू जो भगवान में बिलीव करते हैं वो हिंदुत्व है. उन्होंने मुझे बोला था कि एक क्या हुआ है कि आजमगढ़ को एक लेबल लग चुका है कि वहाँ से ही आतंकवादी पैदा होते हैं. तो कैन यू प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड आजमगढ़. सो आई सेड 100% वी विल नॉट यूज दैट वर्ड. ओके. और सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल, वो मेरा मतलब मुझे नहीं पता है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ. राजकुमार गुप्ता की भी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने पूरा दिखाया था कि किस तरह से ओमेरता जी, हाँ जी, उसको लाया गया. उससे ये कितना डिफरेंट था जो आप लोग जो मुख्य आरोपी को लेकर आए? वो नहीं, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो राजकुमार गुप्ता का जो किरदार था, मेरे ख्याल से वो मसूद अजहर नहीं, नॉट यासीन भटकल. इट वाज द गाय हु बेसिकली beheaded Daniel Pearl. I forget his name.
he was trained, allegedly trained in Pakistan. The boys from the Indian Mujahideen, मुझे हमेशा ये लगता था कि the Indian Mujahideen का एक ये है कि सारे जो उनके जो recruits थे वो सब Indian यहाँ से well educated boys वगैरह थे. So it is very different from जो राजकुमार गुप्ता का जो किरदार था. राजकुमार राव, sorry. जानना चाहूँगी. Oh, राजकुमार गुप्ता के बारे में आप बात कर रहे हो? Sorry, so Rajkumar Gupta, he is right. Rajkumar Gupta is based on Yasin. Yeah, so that is based on Yasin Bhatkal. So Yasin Bhatkal was in charge of a different module. और यहाँ पे जो आदिल अमीन जो हम लोग ने दिखाया है, जो दो दांत के साथ है, वो actually यासीन भटकल के इसमें था, in the same level. अगर आप मुझे जी भटकल, the Bhatkals that एक और court case I cannot, they are saying the Bhatkals are Riaz and Iqbal Bhatkal who are still not been caught. They are out of this country, and so there's no connection with Yasin Bhatkal and them. Yeah. सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है हीना कुमावत आवाज़ से. बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जितनी तारीफ की जाए कम है. आपने अभी बोला कि कुछ कट्स के बाद कल प्रिंट्स लेट होंगे, बहुत सारी जगह पर लेट पहुंचेंगे. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी होगी, तो ऐसे में दर्शक क्या निराश होकर लौटेगा? It will affect the opening day collection. और जो एडवांस बुकिंग कर चुके हैं, तो जो मेरे ख्याल से जो हमने मैसेजेस भेज दिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पैनोरमा ने भी मैसेजेस भेज दिए. दे विल हैंडल इट विद द जिन्होंने एडवांस बुकिंग की है, जो शायद जाएंगे, दे विल हैंडल इट विद देम. इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ उनको बोलने के लिए. वी अपोलोजाइज, हमने बहुत कोशिश की है, बट इट टेक्स टाइम टू रीच फॉर द प्रिंस टू रीच. So it will affect our first day collection tomorrow, but we still wanted to come on 15th August. Thank you for supporting us. Thank you. मधु जी, मेरा सवाल आपसे, बीइंग अ प्रोड्यूसर, अभी जस्ट निखिल जी ने कहा कि यू स्टूड लाइक अ रॉक सॉलिड, लेकिन ये इट्स अ वेरी, मतलब कहते हैं ना, एक फिल्म बना दी हमने, हम कुछ कहानी बताने जा रहे हैं, हमारा एक खुद का एक विजन है जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन जब उसके ऊपर भी ऐसे रुकावट आती है, सो इट्स लाइक अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द ओवरऑल, जो हाल ही का अपना लास्ट जो एक वीक रहा है आप सबका, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट. जब हम फिल्म बनाते हैं, और ना कि सिर्फ इस फिल्म में, आई थिंक हर फिल्म में मेरा ये तजुर्बा रहा है कि हमें कोई ना कोई कहाँ से कोई नोटिस आ जाती है कि टाइटल का कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है. वी बिकम अ सॉफ्ट टारगेट. और क्या होता है कि यू एब्सोल्युटली राइट, प्रोड्यूसर बहुत फिल्म बनाने में इतने पैसे लग जाते हैं, इतने पैसे लोग जुड़ जाते हैं, दी एक्विटीज़ एज दे से, जो लीगल टर्म होता है, वो बहुत, मतलब इट्स अ वेरी बिग स्केल, राइट? आई मीन एवरीबडी सिटिंग हियर, PNA पे खर्चा होता है, बहुत एक्सपोजर होता है. तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे समटाइम्स प्रोड्यूसर्स हैव टू कैपिचुलेट. आपको कोई चॉइस नहीं रहता. But I think the last 1 week, if I can say for us, has been perhaps the most stressful for me in this business. It's a story that is in the public domain. सबको पता है, शायद बॉम्बे में रहते हुए हमको इतनी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ बाटला हाउस में. और इस इंसिडेंट को इतने साल हो गए, मतलब 11 साल हो गए. और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ये हम इतनी बोलबाला करते हैं डेमोक्रेसी में, it's very sad that today, under that guise, you're not able to freely tell a story which is already in the public domain. Of course, having said that, हमारे जो honorable courts हैं, they tried to make sure that it was balanced, because we can understand that at the end of the day, in expressing our freedom of expression, ऐसा ना हो कि it gets in the way of somebody's trial, because आखिर में we are talking about a life and death situation. So, but yes, I think the last 1 week, I can speak for us, it's been, for all of us, we are so invested emotionally, financially, बहुत ही stressful रहा है. And I think कल का जो दिन था especially, जहाँ हमने समझा कि सुबह में ये बात शायद निपट जाएगी, सुबह से लेके postponement हुआ, फिर लंच के पहले बैठे, फिर लंच के बाद बैठे, एक मौके पे तो लगा कि शायद we may not be able to come.
And then by the time it got done, 6 बजे, मतलब पूरा दिन हम अपने पैरों पे रहे, ना खाना खाया, ना पानी पिया, but that was a small sacrifice. You cannot even think about those things because at the end of the day, time is of essence in such a situation. So yeah, I think as a producer, हम जितना stress ले पाते हैं to insulate everybody else, I think we've tried to be very respectful also to the courts up until this point. जब से ये चल रहा है ये मामला, हमने भनक नहीं होने दी किसी को भी, because we did not want to. Yeah, we did, but we did it, you know, voluntarily. We showed the courts the film because अगर हमको if we had any ulterior motive, we would have held back. But जब court ने कहा कि हमको देखनी है, opposite वालों को दिखानी है, उनको देखने दो, we had no problem because, like I said, we have relied on the public domain. फिर भी उसके चलते, we were subject to some sort of scrutiny, cuts दिए गए. So yeah, it's stressful, but I think that it's all worth it. We are standing here. You'll get to see our film. It's an honest expression. बहुत मेहनत गई है. मैं नहीं कहती कि हर फिल्म में मेहनत नहीं जाती है, but खास तौर पे इस पे 4 साल से हम काम कर रहे हैं. So it's been really a labor of love, and I think it deserves a lot of love. Hi, it cannot also help. It cannot also help Madhu, Monisha, Bhushanji, John's team when John and I both stand in one corner and say कि उनको रोकना है रोकने तो पर यही पिक्चर रिलीज होगी. So it cannot help that. Hi, John Neil here, straight. Hi. My question is again on the same point of freedom of expression, wherein 4 साल लगे इस film को आपको, kind of a struggle that you've been through. But somewhere down the line, do you think in this case creative freedom कहीं ना कहीं आप लोगों का डगमगा जाता है या फिर writer के भावनाओं के साथ खेला जाता है? So not in terms of this film, but how do you think filmmakers should kind of or the association should kind of look into it in terms of not tampering what the writer wants to express, and what is your opinion on how this can be handled? I think this particular case is, I mean, it will possibly, the people tell me it will possibly set precedent. It's not like every other case that, like Madhu said, where we do get notices for title or for somebody who says that no, it is my story, or I have written a script, or etc. etc. You know, from various words. This had to do with an ongoing appeal of somebody who we are showing, and therefore we had to prove to the honorable court that the conviction came in 2010 or 2013. 2013 the conviction came, and post that there have been so many things that have been written about the Bartlaus encounter and about the conviction and about the judgment and about various points of views that by stopping our film you will have to even erase all that. You know, you cannot just cannot just take a stand that this film is going to prejudice people who are going to be required to give any kind of these things for that the appeal. So that is what he finally. So the most important thing for you is that the law is very worked in our favor. But I would like to add one thing, Nikhil. I think censor board, जो काफी they get a lot of flack. I have to salute them because when they watched this film, we were very concerned that will they get the point? क्या उनको ये समझ में आएगा कि we have made this film with not just a lot of honesty, but based on what is in the public domain. And when we showed them the film, I kid you not, I think practically 0 cuts except for a few audio cuts. Two audio cuts. Yeah, they stuck by our conviction and fact, applauded it. In fact, they already had been sent the petition by the petitioners to this. So they had the petition with them, and they asked us questions: who's this? How is this? What is this? How have you done this? Show us where you got this information from. They went through everything with us, and we answered everything. And after that, they gave us a UA certificate. So, and the censor board stood by us yesterday at the court, and they stood by us and they said, we stand by this film. So yeah, we have. So when you're asking us, as far as associations are concerned, salute to the censor board. Okay. My question to John, do you think this expression of yours through this film, after the cuts, is it going to create the same impact as before? Because at the end moment when this is happening. After these cuts? Yeah. Yeah, I think it won't really affect the storytelling, but we've seen it before and after.
I think from a normal audience point of view, it shouldn't really be that big of a difference. No, I'm not worried. I will always say yes. My answer will always be yes. I want the film to be in the way that it was intended. But I mean, we were allowed to make some concessions, and we fought back, we pushed back, they kept asking, and we finally reached a medium ground. But yeah, I wish we could show the film the way it was intended to be shown. John sir, just one last thing. सच्चाई की तो आखिर में जीत हुई, but again it's proved, you know, films are the soft target. So what do you want to say about it? मतलब films are the soft target. But without knowing the facts, without even looking after it, मतलब फिल्मों को हमेशा soft target, easy target बनाया जाता है. Yeah, I mean, I think there are responsible filmmakers. There are some filmmakers, I must say, that are not very, very responsible also. But I don't think we fall in that bracket. And yeah, I mean, if somebody, that's what democracy is all about. If you've got a point of view, want to raise an issue, raise a question, you must. And I think it's absolutely okay. If we're in a platform where people want to question us, we should be ready with answers. So I wouldn't look at myself as the victim or us as a victim here, but we are perpetrators of discussion, and we must be available for discussion. So that's the way I look at it. We're not victim, and every time we always say we're victimized. नहीं होता है ऐसे, इतना भी बुरा नहीं होता है, except for social media जो trolls होते हैं ना, faceless people. Besides that, everything is fine. हेलो. Yeah. मेरा सवाल मधु जी से और निखिल जी से दोनों से है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की. कल जीत का दिन भी है और कल एक और दिन है, रक्षाबंधन जी, और आप दोनों भाई बहन हैं जी, तो एक दूसरे को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? बहन तो वहाँ पे है, बहन इधर नीचे बैठी है. ये नहीं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हम खून से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बचपन से है, और आई थिंक we have a very, very strong bond as childhood friends. And but coming back to your question, no, it's yes, you're right. It's Raksha Bandhan, and Nikhil's sister Monisha is sitting right here. Was sitting outside the court for the same time, and then inside, सिर्फ झपोइंग. I have never. मतलब there is power in that also, I guess. अच्छा, और मेरा सवाल जॉन जी से कि ये पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते समय मतलब काफ़ी मेंटली टॉर्चर हुए होंगे आप शायद, मतलब ऐसा लगता होगा कि कितना फेस किया होगा जो रियल थे. जी, आई थिंक मतलब आपने देखा होगा, आपने फिल्म देखी है, राइट, उसमें ही सफर्ड फ्रॉम PTSD, ही सफर्ड फ्रॉम, ही वांटेड टू किल हिमसेल्फ, तो वो थोड़ा वो प्रोसेस था, लेकिन आई थिंक इन वर्कशॉप्स वी डिड व्हाट वी हैड टू. पर्सनली किसी ने जोक किया मेरे साथ कि अगर आप 100 डायल करोगे तो जॉन इब्राहिम उठाएगा फ़ोन. You know, so I think there's a fact that मुझे अच्छा लगता है ये roles play करने में, और उसके साथ जो भी इसका baggage होता है, जैसे PTSD, stress disorders, ये सब कुछ is part of the process. उसको depict कैसे करना होता है, that's very important. और आपने जब मतलब शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा था कि मॉडल है और एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, हैंडसम दिखते हैं लेकिन एक्टिंग नहीं आती. आज बोलते हैं कि एक्टर अच्छे हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? As long as I'm still handsome, it's okay. Thank you guys, thank you. Please put the word out there. We need lots of people. The film is releasing tomorrow. I think we want to end on one note, which is that I think this is a great film, a medium for us to salute our police force that's out there, and I think it's a great way for us to say thank you to them. Thank you for supporting the film. Really appreciate you all seeing it. Thank you so much. Come guys, you all want to come up?